Hello guys, welcome to my YouTube channel Mr. Medical Hacker. Today we are discussing about TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation. TENS is a low frequency current mainly used for the management of pain both acute and chronic type. टेंस जो होता है ये लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है, इसको हम बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट जो होता है वो 1 to 7 डेज़ तक होता है, सब एक्यूट में जो होता है वो 7 to 15 डेज़ तक, और क्रोनिक 15 डेज से अबव वाला पेन को हम क्रोनिक पेन कहते हैं। Without narcotics, also used to produce muscle contraction or to introduce chemicals into the body, iontophoresis. Meters of TENS: pulse frequency 2 Hz to 600 Hz, commonly used 150 Hz. Pulse width 50 to 300 joule per second, commonly used 100 joule per second. Intensity 0 to 60 milliampere. Intensity till tingling sensation. Types of TENS: high TENS, low TENS, burst TENS, brief TENS, modulated TENS. High TENS: conventional TENS, high frequency, low intensity. Frequency 100 Hz to 150 Hz. Intensity 12 to 30 milliampere. Pulse width 100 to 500 ps. Used in acute and superficial pain. Low TENS, acupuncture TENS. High intensity, low frequency. Frequency 1 to 5 Hz. Intensity 300 milliampere. The pulse width will be 100 to 500 microsecond. Generally used in chronic pain and deep pain. Burst TENS, wave train series of pulses repeated 1 to 5 times a second. Frequency 50 to 150 Hz. Non-continuous, no intensity. Brief TENS, long duration impulses 0.2 microsecond. Frequency 100 Hz. Intensity 20 to 50 milliampere. It is mainly used for local pain relief. Modulation in impulse length, frequency, amplitude of pulse. Modulated mode has been advocated by some manufacturers to prevent accommodation of stimulation or to improve patient tolerance. इंडिकेशंस ऑफ टेंस, मतलब इसके हम इंडिकेशंस मतलब हम टेंस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लो बैक पेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन, आर्थराइटिक पेन, जॉइंट पेन, ऑब्स्ट्रक्टिव पेन या फिर डिलीवरी टू रिड्यूस लेबर पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड फ्रैक्चर हीलिंग। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ टेंस, मतलब हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। नेवर यूज इन स्पाज्मोडिक पेन, एब्डोमेन, कोलिक, ट्यूमर पेन, over eyes, larynx, pharynx and cerebrovascular accident, epilepsy या फिर दौरे पड़ना, chest and cardiac pain, implants and pacemakers. In the second part of TENS theory part 2, we will cover methods of application, preparation of patient in next part. Please like, share and subscribe our channel Mr. Medical Hacker. Thanks for giving your full support.